आज के वीडियो में हम एक बहुत ही पॉपुलर कंसल्टिंग केस फ्रेमवर्क समझने की कोशिश करेंगे विच इज कॉल्ड द पोर्टर्स 5 फोर्सेस। हाय एवरीवन, वेलकम टू इनसाइडर ज्ञान। मेरा नाम सौमी है। आई एम एन IIT Delhi and ISB Hyderabad grad and I have been working in consulting for quite a few years now. On this channel, I share my career experiences. I also teach you a little bit about different business terms, consulting case frameworks, Excel, etc. So, अगर आपको इन सब चीज़ों में एंथु है और जानने का तो please subscribe to the channel. Every Tuesday, I have been putting out an educational kind of a video. Last 2 हफ्ते we had tried to understand a profit and loss statement of a company. And आज हम एक consulting case framework के बारे में जानेंगे, which is called the Porter's 5 Forces. ये काफी popular सी framework है. Now, if I have to break down this video, I'm going to break it out into 3 key parts. First section, we are going to try and understand what the framework actually is. In the second part, we are going to understand what are the different situations where you will be using this framework. And lastly, if you stick around till the end, you will get some bonus tips. Okay, so let's start with section 1, which is what the framework is. Essentially, ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की एक फ्रेमवर्क है एक इंडस्ट्री को एनालाइज करने के लिए. सो it tells you very strongly about how competitive an industry is and if the new market is worth for you to enter at this point or not. And competition is honestly very important to understand before you start a business because competition से ही आपकी profitability determine होगी, right? अगर आपके पास कोई competitor है ही नहीं तो आपके पास pretty much pricing power है and you can rule the market. But अगर बहुत सारे competitors है then it will put a downward pressure on your profits, on your company profits, which is why it's important to understand. Now, Porter's 5 forces में obviously 5 की कंपोनेंट्स है जानने के लिए कि एनवायरनमेंट कैसा काम करेगा आपके लिए. नंबर 1 इज राइवलरी अमंग द करंट कॉम्पिटिटर्स, विच मीन्स अभी आपके इंडस्ट्री में जिस भी मार्केट में आप एंटर करना चाहते हो मे बी कितने कॉम्पिटिटर्स है ऑलरेडी एंड हाउ कॉम्पिटिटिव इज दिस प्लेस. दैट्स फैक्टर नंबर 1. सेकेंड फैक्टर इज बैरियर्स टू एंट्री फॉर न्यू कॉम्पिटिटर्स. ऐसा पॉसिबल है कि आज तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं है बट लोगों के लिए इस स्पेस में एंटर करना बहुत आसान है. Maybe the cost, like the barrier to entry is very, very low. And a lot of businesses, if they see that this product is successful in the market, tomorrow a lot of companies will come and try to manufacture this, right? So this is called barrier to entry of new competitors. Less the barrier, more likelihood of new competitors. Factor number 3 is threat of substitute product, which means आपके पास एक product है, maybe आपने launch किया. What is the potential of different like substitutes of that product coming into the market to solve the same problem that you are trying to solve using your product? अगर threat to substitutes बहुत ज़्यादा है, which means tomorrow the demand for your product is going to go down because it's possible that competitors will launch substitute products which are better or maybe at a lower price and then it hurts you, right, as a business. So that's factor number 3. And fourth factor is bargaining power of buyer. And यहाँ पे demand supply को समझने की ज़रूरत है. अगर आपकी demand बहुत कम है and supply बहुत ज़्यादा तो naturally आपको प्राइसिंग कम करना पड़ेगा एंड यू विल फेस मोर इंटेंस कंपटीशन. पावर बेसिकली बार्गेनिंग पावर जो है वो बायर के पास आ जाएगा वर्सेस कि अगर डिमांड बहुत ज्यादा है एंड सप्लाई कम है तब आपके पास लाइक एज अ सप्लायर जो प्रोडक्ट कंपनीज है उनके पास बहुत ज्यादा पावर है. दे कैन प्राइस इट हाई. डिमांड क्योंकि हाई है तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु विल बी ईगर टू बाय दैट प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस ऑल्सो, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड फिफ्थ इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स. ना होता ये है ना कि कोई भी प्रोडक्ट आपको अगर मार्केट में ले जाना है तो आपको कई बार सप्लायर्स के साथ बात करने की जरूरत है. मे बी द सप्लायर्स आर प्रोवाइडिंग यू द रॉ मटेरियल्स फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड अगर सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, मे बी दे आर वेरी फ्यू इन नंबर या उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि कोई और सप्लायर है ही नहीं मार्केट में जो इतने अच्छी क्वालिटी आपको दे सके. पावर उनके पास आ गई तो वो प्राइस बढ़ा सकते हैं आपके रॉ मटेरियल्स की. उससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी एंड आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई बार्गेनिंग power of supplier is the 5th component. Now, let's go through each of these components one by one and see what are the things that you will
see, like what are the parameters you will see in each of these. So number one was rivalry of competitors. इसमें आपके 2-3 चीजें देखने की जरूरत है, and of course this list is not exhaustive, there could be other things, but something that comes to my mind are, number one is number of competitors in that space. If it is 1 or 2, then it's okay, versus if it is 20 competitors that you have in the market, then probably not a good idea for a new business to enter. Right? It's also important to see how fast the industry is growing. क्योंकि ऐसा possible है कि बहुत ही fast growing industry है, and maybe today there are 20 competitors, but there is enough space for 10 more to come in which case you should still go ahead and enter into that specific market because आपके लिए एक अलग सी space है. I think content creation is a great example of that. You know, content creators इतने सारे आते रहते हैं, supply बहुत ज़्यादा है, but क्योंकि economy इतनी grow कर रही है, creator economy, there is still space for more and more creators to come in. It's still not saturated. So that's about rivalry of competitors. If we move on to the next one, which is new entrants. इसमें आपको क्या-क्या चीजें आप देख सकते हो? Firstly, cost to enter the new business. अगर cost बहुत ज़्यादा है, तो मे बी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स एंटर ही नहीं कर पाएंगे वो मार्केट क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए. सो दैट कुड बी अ बिग बैरियर टू एंट्री. सेकंड कुड बी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स व्हिच आई थिंक इज वेरी सिमिलर टू कॉस्ट्स, क्योंकि अगर बहुत कैपिटल इंटेंसिव मार्केट है, अगर जैसे मान लो आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डेवलप करना है या बिठाना है उसके लिए, तो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव हो गया. उसमें भी कई सारी कंपनीज कॉम्पिटिटर्स एंटर नहीं कर पाएंगी, विच मीन्स योर एंट्री बैरियर इज हाई. देन देयर कुड बी रेगुलेशंस. Regulations is typically a big entry barrier these days, especially in the financial, fintech and financial sector. क्योंकि financial sector especially हर country में बहुत ज़्यादा regulated होता है. And कुछ companies तो इसीलिए कुछ markets enter नहीं करना चाहते because the regulations are so strong over there. They feel like बहुत ज़्यादा uncertainty आ जाती है. मतलब अगर वो उन्होंने launch किया भी नए market में, maybe tomorrow the regulations change and they have to take a hit and exit the business or something like that. So regulations are typically a big barrier to entry. Switching costs could also be barrier to entry. Switching cost means अगर आपका कोई एक नया प्रोडक्ट आ गया मार्केट में, तो कस्टमर का कॉस्ट क्या है टू स्विच फ्रॉम योर प्रोडक्ट टू अ न्यू प्रोडक्ट. जैसे कि आप मान लो नेटफ्लिक्स हो गया, राइट? मे बी नेटफ्लिक्स एंड Amazon Prime आर प्रोड्यूसिंग वेरी सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्टेंट, राइट? सो अगर आज आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है, कल Amazon आई मार्केट में कम प्राइस में, सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट है, तो आप नेचुरली Amazon में शिफ्ट कर जाओगे, राइट? तो कॉस्ट, स्विचिंग कॉस्ट आर वेरी वेरी लो ओवर देयर. बट अगर आपने नेटफ्लिक्स में ऑलरेडी मान लो 5 साल का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट ले लिया है कस्टमर से, तब कस्टमर की स्विचिंग कॉस्ट बढ़ गई है. अब वो Amazon अगर बेटर कंटेंट लाके भी लॉन्च कर रहा है एट अ बेटर प्राइस, देन यू विल नॉट वांट टू लूज योर अमाउंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन नेटफ्लिक्स ऑलरेडी टू मूव, राइट? सो केस में स्विचिंग कॉस्ट कस्टमर की बढ़ गई है. सो दोज आर सम ऑफ द थिंग्स अबाउट न्यू एंट्रेंट्स एंड एंट्री बैरियर्स. थर्ड थिंग जो आता है विच इज थ्रेट फॉर सब्स्टिट्यूट्स. नाउ थ्रेट फॉर सब्स्टिट्यूट्स में आपको क्या क्या देखने की जरूरत है एज अ कंपनी? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन दैट यू ब्रिंग टू द मार्केट, एंड वो जो डिफरेंशिएशन है वो कितना इजीली कॉपीएबल है वाया द अदर बिजनेसेस. जैसे फॉर एग्जांपल फार्मा इंडस्ट्री इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस. फार्मा इंडस्ट्री में जो मेडिसिन जब भी आती है ना मार्केट में, दे आर यूजुअली patented, right? If you get a patent, then you get the patent exclusive rights for that product for say the next 20 or 30 years altogether. In that kind of a situation, you can consider your product to be really differentiated क्योंकि और कोई आ ही नहीं पाएगा उस टाइम पे मार्केट में. The other aspects of differentiation are also कि कितना uniquely आप कस्टमर की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो, कितना डिफरेंट है from the other similar kind of products or rather similar products that are catering the same problem, उससे आपका प्रोडक्ट कितना डिफरेंट है. एंड मोर ओवर उस डिफरेंशिएशन के लिए क्या आप कस्टमर को एक एडिशनल चार्ज कर सकते हो, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन और कोई नहीं ला पा रहा है, तो क्या वो इतना वैल्यू एडिंग है कस्टमर के लिए कि वो एक्स्ट्रा पे करने को तैयार है आप उसके लिए. सो दैट्स about differentiation. Also, number of substitutes already available or potential for new substitutes to come up. Obviously, you will take a look at that. And then also the price difference between substitutes. अगर cheaper substitutes बहुत easily available है उस market में, तो आपके product का कोई value ही नहीं है because obviously customers are going to go for the cheaper substitutes. But कोई ऐसी space हो सकती है जहाँ पे better quality products matter a lot more. You know, जैसे कि मान लो आप एक electronic space हो गया, वहाँ पे अगर आप
आपकी प्राइस ज़्यादा भी है but quality of the product is very very good, then customer will obviously want to buy your product. Versus say for instance like a command hook काइंड ऑफ अ कंपनी जो कि बहुत आसान है किसी के लिए भी बनाना, उसमें अगर मतलब कोई कमांड की जगह कोई नॉन कमांड स्ट्रिप आ गई मार्केट में तो पीपल विल इजीली गो फॉर इट एंड जस्ट बाय दैट प्रोडक्ट, राइट? तो उस केस में आपके पास कोई डिफरेंशिएशन नहीं रही प्राइसिंग के टर्म्स में. सो दैट्स अबाउट सब्स्टिट्यूट्स. एंड नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर. बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर में आपको जानने की जरूरत है कि डिमांड एंड सप्लाई गैप कितना है, नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं वर्सेस हाउ मच इज द सप्लाई फॉर दैट specific product. Then it's also important to understand price sensitivity and elasticity over here. And bargaining power of buyer में आप number of competitors भी देखेंगे, number of substitute products etc. in the market, क्योंकि the more options buyers have to choose from, obviously that's giving the buyer an edge. It's adding to the bargaining power of buyer, and then it doesn't make the market very attractive for you to enter. Power of suppliers, again यहाँ पे one of the main things that you need to see over here are the number of suppliers available, क्योंकि कई इंडस्ट्रीज में बहुत ही कम सप्लायर्स होते हैं एंड दे हैव द होल प्राइसिंग पावर फॉर रॉ मटेरियल्स एंड दैट पुट्स यू इन अ वेरी बैड पोजीशन. अगर आपकी एक सप्लायर ने आपकी जगह कल को आपके कॉम्पिटिटर को बेचना शुरू कर दिया रॉ मटेरियल्स, तो आप तो गए, मतलब आपके पास सप्लाईज ही नहीं है, आपके पास भले ही कस्टमर्स हो, आपके पास प्रोडक्ट बनाने का कोई तरीका ही नहीं है, राइट? सो नंबर ऑफ सप्लायर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन विद इन सप्लायर्स, कि अगर बहुत सारे सप्लायर्स है भी तो भी हाउ मेनी आर देयर हु आर प्रोवाइडिंग लाइक डिफरेंशिएटेड रॉ मटेरियल्स टू यू एंड इज इट ऑफ वैल्यू टू यू एट ऑल. सो ये सारा चीजें समझ के वी कैन मेक अ कॉल about how competitive a specific industry is. Now that we have a good understanding of this framework, let's try and understand what kind of situations you are going to use the framework in. Okay, किस तरह के cases आपको पूछेंगे? Maybe it is going to be something like a market entry case. You have a client who wants to enter a new market and they want you to sort of analyze whether it's a good industry to enter or not, whether it's a good market to enter or not. Or it could be a new product launch related case problem where they are telling you that the client wants to come up with launch a new product and they want to understand ki market kaisa hai, whether they should launch this new product at all or not. Also, there could be situations where you will be said that there's a reducing profit in this specific industry. So help me understand why that is the case. And over here again, you would want to understand the competition overall, right, in the market, and then come up with whether each of these factors are leading to reducing profitability in that sector. Last section of the video, some bonus tips for you. Bonus tip number 1 is do not use the framework as is and definitely don't name the framework, okay? Definitely when you are asked a case question, don't say ki, you know what, I'm going to use the Porter's 5 forces framework over here. बहुत ही unprofessional लगता है अगर आप किसी framework का नाम लेते हो. आप वो framework use कर सकते हो but वो नाम मत लो and try to modify it based on like case to case basis. Second bonus tip is exactly that कि modify कर लो case to case basis पे, because you know what happens is cases solve करने के लिए frameworks are very good because frameworks give you a thought process, how to structure your thoughts, but at the same time they can also be very very restrictive क्योंकि वो high pressure environment होता है इंटरव्यू में and कई बार अगर आप किसी एक framework item में अटक जाओ ना तो आपको लगेगा कि oh my god ये framework तो use नहीं हो सकता इस situation में क्योंकि ये वाला तो apply नहीं होता है. That's a wrong way to think about it. Frameworks shouldn't be restrictive. Like feel free to modify and play around with your framework, what works best in that kind of a situation. So बहुत ज़्यादा dependency मत रखना framework पे, framework का नाम मत लेना that you are using this framework, but otherwise these are the aspects that you can use to solve your case. Hope you guys liked this video. If you did, please like the button and subscribe to the channel, and please also tell me in comments or through your likes whether you are enjoying this educational kind of framework kind of videos. If so, I'll continue making them. If not, I'll discontinue. So yeah, see you in the next one. Till then, bye.